हेलो Rajasmita. Yes, sir. See, earlier we have discussed software reliability, right? The software reliability, if software reliability is one important things in SE, software engineering. The reliability of a software product you can define as the probability of the product working correctly over a given period of time, right? Over a given period of time. So reliability means how many number of errors created in which locations. It is reliability of the software. So, suppose any product, before you design any software, customers will demand you your software reliability. I how many times your product or software gives the error, how many times of error gives your software product in a given period of time. So if your error rate is reduced, that software has a more reliability. This is a problem of network, right? Right now audible voice? Yes, sir. See, so software product, suppose you have designed a one software, then you deliver to the particular client, and client hosted your product in any domain. Suppose maybe if you think realize one software product may be SBI software product. Suppose one company any software general. Hello. 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 Rajasmita. Hello. Yes, sir. First audible? Yes, sir. See, reliability of a software product improves the, listen, one word you have to listen. Reliability of a software improves the number of defects in it reduced, you can say, or your software reliability or reliability of the product improves the reduce of defect. Your if you have a design one software, your software suppose reliability, your software is more reliable, that means chances of error or defects will be reduced. तुम जदि सॉफ्टवेयर तुम डिजाइन कर सॉफ्टवेयर डिजाइन करार पर तुम जो एरर रेट जदि रिड्यूस्ड होची तार माने योर सॉफ्टवेयर हैज मोर रिलायबल. Reliability of a software defines or improves the reduce of the defects or error. तार एरर आउ डिफेक्ट्स यदि तुमर रिड्यूस होची तुमर माने इंप्रूव होची कोडा इंप्रूव होची तुमर एरर रेट आउ डिफेक्ट्स टा
जो इम्प्रूव होउची माने रिड्यूस दी माने तुम्हार क्वालिटी रे जो समय इम्प्रूव होबो तो एरर रेट्स or defects of the software will be reduced. That means it improves the your software reliability improves your software reliability improves the reduce of defects or errors, right? If you have designed one software and your improves the reduce or reduce of the defects or error, that means you have a good software. You have a good software or quality based product or quality based software. If some of the characteristics earlier we have discussed, if these are the characteristics you have or behind the any software, that means by default you can say this software is quality based software. Quality based software, when you can say one software is a quality based software, some of the parameters or you can say some of the characteristics, if you have a one particular software, then you can say this is a quality based software. If you have a quality based software, that means you can say it is a more reliable software, right? Earlier we have last class we have discussed, still today still I am recalling to this content to you so that you very much you should clear your the concept. So characteristics of the good software or quality based software is one is portable. What are the characteristics, Soumya? One is portable, second one is usability, and third one is reusable. Usability or reusability, correctness or maintainability. Maintainability means you can easily maintain, or some of the few numbers of designers will come to your office and they can they have a code, object code or byte code. So they have a code, but they can easily maintain, or any errors or any your problems they can easily sort out. That is easily maintainability. Suppose you have a one smartphone, your smartphone is not properly working, suddenly you can reset or suddenly you can format your system, or you can freeze the memory or refresh the memory, then your device will be running, right? So easily they can easily sort out the problems. They can easily sort out the problems means you have a one problems, they quickly come and sort out the problems and users can easily access the things. So that's easily maintainability. Suppose you have a suppose Soumya is staying in Cuttack, so in nearest location there is one SBI ATM. So some by default any problems, so some expert person will come from the SBI organizations, then they can easily see, oh, these are the problems. Within half an hour or 30 minutes or 20 minutes, they can easily rectify the problem, sort out the problems. Then every customers, users, they can easily withdraw, deposit their transactions, they can easily do. So easily maintainability means easily they can maintain. There is no B, so they cannot solve the problems, right? This type of not, right? So correctness means if you have, suppose you have sent a 10,000 money to Rajasmita, sent to 10,000 money to Soumya, right? Rajasmita. Hello. Yes, sir. Yes, जमा sir. पठेबनी सौम्य और रिटर्न करबनी तुम पैसा, राइट? सौम्य हाँ, राजस्मिता तुमको 10,000 पठेबनी, मु किंतु कंसीडर करछि एग्जांपल दे एग्जांपल. तो सपोज राजस्मिता सेंड 10,000 टू सौम्य. राजस्मिता जमा पठेबनी, से बाइक फाइक कोन किनी देबा, पैसा पैसा देबन, से कहबो एगा से मोबाइल किनी देबा, तो देबनी तुम, राइट? तो सी असुविधा पड़े जॉब कले तुम ताकू हेल्प कर एबे नहीं. तो राजस्मिता सेंड टू 10,000 टू सौम्य फॉर एनी पर्पस, राइट? So suppose Rajasmita send and she has a one screenshot also, but after he has sent to Soumya, then Soumya will not be agreed. So no, I did not get any money from your side. So this type of things or illegal things Soumya cannot say to
third party, that means SBI. Your transaction means so Rajasmita sent to State Bank sent to Somya. So there is a third party is also known as SBI. So third party has some evidence. So third party has some evidence for the transactions, so that you have sent, Rajasmita sent means definitely Somya got the money 10,000. So this is a reliable or reliability product. That means by using any sites or any softwares, if you send or any transactions you can do, that means you cannot agreed that no, she did not or he did not send to me that like these things you cannot say. You have sent me, definitely he got the money. So why I am saying this, these are the things when that means software has correctness. Any transactions, they have receipt, they have screenshot, they have transaction slip or transaction receipt, or your timing managed or money deducted from your account. So everything, every movement, every mini micro transactions, they saved in their database. So that's easily the software is correctness. Correctness means whatever you are doing by using that software, that means definitely that software, what response giving to you, that is fully 110% is correct. Right? You cannot avoid that. No, I did not get money or I did not get any message from your side. You must bound. You will got the things. So reusability means any software you have to design so that is your software quality. That is a good quality. Good software or quality based software. That is reusability means many times. Suppose you have you give the tender to the TCS, so please, or within few days or few months you make my software or my product, so very emergency for me or for doing my business, then definitely he will take some money and some time, then he deliver to you for the product. Then that time, once you have installed that software to your system, suppose any your file crafted or your system is crafted, so you know your software is not properly working, they had original or source file, so they can again create the bytecode and host into any websites. They reusable means anytime any problem created from client side or user side, they can easily sort out because software is reusability, right? Suppose you Somyo he has written one code and that code is reusable means you by using that code, if you run, you will get the same output, and after you got the output, your source code give to the another Rajasmita, and Rajasmita she will take the code and run by using her system or computers. They can also she got the same concept or same output or same things what Somyo got, right? That is by using same software. That is reusability. That means software is also reusable or your code is also reusable. Usability means you can usable or you can use it. That is not your software is designed and still you are not using. Then which purpose you have designed? You have design code, you have a quality based product you made. That means it is 110% is usability. That means you can easily use. Sorry. Right? So your software is usable or usability. And that is portable. Earlier we have discussed portable means Somya. तुम्हें कहो what does mean by portable? Somya? Yes, sir. Portable means कौन? Portable. ठीक अछि सुना मु कहूची ठीक अछि नाही कहि पला सुनो तुमे किछि दिन आगुरे पोर्टेबल इजी लो कैरी आगो जो स्पीकर थला एते बड़ थला कोठे नै जीवो मुडे ओ नै कि जीवो तुमर ओ पिकनिक जीवो तापर देखिबा गुटे एते राउंड शेप रो गुटे पिन टाइप रो आसुतला पोर्टेबल स्पीकर पॉकेट रे पळेबो
Portable means easily you can carry it. Easily Right. can carry. Easily you can carry it, and cost also that is not maximum cost, minimum cost, and smoothly you can use and you can easily carry. That is portable. Right. This is software reliability. Software reliability ମୁଁ ଯାହା ଯାହା କହିଥିଲି ତୁମକୁ ଯେ କିଛି ପଢିବ ସଫ୍ଟୱେୟାର ରିଲାଏବିଲିଟି ପେପର ପଢିଥିଲ ନା ନାଇଁ ସଚି? Yes sir. এই যে আমার যে গ্রুপটা ଅଛି ସେ ଗ୍ରୁପଟାରେ ମତେ ଗ୍ରୁପ ଆଡମିନ୍ କରିବ ହେଲା। ସେଟା ପୁରୁଣା କେ ଥିଲେ ସେ ସମୟ ଚାଲୁଥିଲା ସେଇ ଗ୍ରୁପଟାରେ ଅଛି ମତେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲି ସେଠି ଗ୍ରୁପ ଆଡମିନ୍ କରିବ ସୌମେନ୍ଦ୍ର ସାର୍ କୁ ଆଡ୍ ହଁ ସୌମେନ୍ଦ୍ର ସାର୍ କୁ ଆଡ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ସେ କ୍ଲାସ ନେବ। ଓକେ ସି थैंक यू। Requirement of ISO 9000 certification ମୁଁ କହିଲି ରାଇଟ୍। Requirement ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ରେ ମୁଁ କହୁଥିଲି still I am repeating requirement of ISO 9000 certification. ISO full form is International Organization for Standardization. International Organization for Standardization. Before the ISO certified to make any product, maybe food, maybe chair decks, or maybe medicine, maybe your software to me ISO certified kolla mane your product is by default quality based product. Market रे तुम्हें सेटा पाइलो माने एकदम माने ब्लाइंडली यू कैन परचेज जे एटा भलो काम देबो राइट। तुम्हें जानि छ तनिष्का आईएसओ सर्टिफाइड तनिष्का गोल्ड आनिलो माने तुम्हें जानि छ आकु इन एनी प्रॉब्लम जहाँ भी होबो ताकु बिकिले तुम्हें ता 95% टंका पाइबो। 10 लाख रे नेलो माने तुम्हें 9 लाख जोठे देले भी 9,50,000 पाइबो, बेसी पाइबो वरन कम पाइबोन हैला। तो दैट इज आईओसी सर्टिफाइड मींस क्वालिटी बेस्ड or quality managed product, right? So what are the requirement of ISO certified? So what are the requirement of ISO 9000 certification? यदि तुम्हें ISO मन कर गुटे सोची गुटे प्रोडक्ट बनौछि से ISO certified करिवो तार प्रोडक्ट को what are the यदि रिक्वायरमेंट कोन कोन the confidence of customers in an organization जेकोनसी organization रे बा जेकोनसी objects रे जेकोनसी things रे यदि ISO certified means customers or peoples they can blindly believe that this product is very well. So confidence, your product is confidence. ISO 9000 requires a well document, so you have well documented. Documented means you have soft copy also. ISO 9000 makes the development process focus. If you have some of the steps are behind the any product if you have designed, so ISO 9000 makes the development process how to easily you can develop, and product has efficient and product has cost effective. In minimum cost you have to design, efficient also goes and focused. Most of the employees or developers they can easily focus to design the software because if your product is ISO certified that means your ISO certified is well documented. So inside your document some of the phases already defined, so which way you have to design so that easily you can make the software product, and you have to focus on the making the software product process. And next is ISO 9000 certification points out the weak points, and you have a product and your same product or same things is ISO certified, and if you compare then your weak points or defects points you can easily point out or sort out the weak points. के कॉल करछि तो ISO 9000 से पटे कथा पटे कथा ISO 9000 हम सामने को जाऊ कौन है आज्ञा हाँ ठीक अच्छे कोई मिठाई जाऊ और रखुछ आज्ञा के रखुछ विश्वास सारा कहते को ब्रोस्टर आगे थोड़ी दिखे आछि अच्छा शीघ्र सॉरी ISO 9000 sets the basic framework जानी छ for the development of an optimal process. गुटे प्रोसेस तुमर जो सॉफ्टवेयर टा बा जहा जिकोनसी गुटे सिस्टम बा प्रोसेस में बनाउ छ तार सॉरी
तार डेवलपमेंट प्रोसेस टा को ऑप्टिमल कर देबो ऑप्टिमल माने कोन मु एबे तुमको सॉफ्टवेयर पूरा इंजीनियरिंग पढ़ेली तुमको whole syllabus suppose 10% still we have remaining and 90% I have completed for your syllabus. So that is if you have a optimal solution means after complete the course we are giving to this some 40 30 50 your selective questions. So I am giving the selective questions to you, that means that is a optimal process. Somebody will focus only the 40 or 50% questions, they can, he or she can easily pass out the semester, because I have designed a one process that is optimal. Optimal means you can easily read, you can easily finish the course with less period of time, and you can easily understand, because whole of the products or whole of the things or whole of the syllabus, if you study it will take the time taking process and also cost effective. So these are the things, if we have to reduce, that means development process or passing the mark or getting the maximum marks, it will be optimal. You can get the maximum mark with less period of time if you focus on your study, right? So ISO 9000 sets the basic framework. Framework means कौन? Framework is also known as an environment. तो तुम्हें से एनवायरनमेंट से प्लेटफॉर्म रे तुम्हें जदी पड़ी जीवो तले तुम डेवलपमेंट प्रोसेस टा को ऑप्टिमल हे जीवो बुझी पाइलो मोनालिसा सची Yes, sir. हां तो तुम्हें आउ थरे कहूची तुम डेवलपमेंट प्रोसेस टा को जदी ऑप्टिमल करिवो ऑप्टिमल माने लेस कॉस्ट लेस टाइम क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट त कम पढिबो मन कर मु कहूची ऑप्टिमल कर देली तुम सिलेबस टा माने कम 10 घंटा पढ़िबा दरकार नहीं 5 घंटा पढ़िलो मैक्सिमम मार्क पाइबो सिलेक्टिव क्वेश्चंस पाइगलो तापर तुमर हायर एजुकेशन पाई भी तुमर बेनिफिट तुमे रहिलो तो दीज आर दी इफ यू हैव ए ऑप्टिमल प्रोसेस दैट मींस यू कैन गेट द मैक्सिमम बेनिफिट्स राइट कम टंका रे पाइलो कम किछि गोटे जिनिस किनिबो माने ऑप्टिमल हे गला ऑप्टिमल माने तुमे भी आ गुटे स्पीकर फास्ट स्पीकर आसुतला 4000 5000 टंका रे एते बड़ नॉर्मल स्पीकर एबे तुमे देखिबो रोड रे सब ए जे हम राउंड राउंड कोन मु ना जाने आई डोंट हैव आईडिया अबाउट दैट स्पीकर सो एमती राउंड राउंड केमती सब ग्लास टाइप रो सब स्पीकर को क्वालिटी V3 V5.0 एमती सब नाम सब स्पीकर रहउची तो से स्पीकर माने कोन से ऑप्टिमल हे गला आगु जो ऑप्टिमल थला एबे देखिबो कार फार रे जो ये फोन लगाउछंती सॉरी ए जे साउंड म्यूजिक सिस्टम लगाउछंती आगो पछटे एते बड़ बड़ डिकी टाइप रा सब लागना तला एबे एते स्मॉल स्मॉल पोर्टेबल अछि ये अछि मैग्नेट चिपका अछि चिपकै दोछंती गाड़ी भितरी तुमरे बस रे जाउछ डांस फांस करी पिकनिक जाउछ तो से तुमे स्मॉल स्पीकर दुटा नेकी पळौछ एते बड़ स्पीकर और म्यूजिक सिस्टम नो so that is optimal process माने for the design and time consuming cost reduced these are the parameters they have to keep for design the one system from the existing system so that is development process is optimal माने कम समय रे कम टंका रे maximum benefits that is optimal right आ कोन थला हाँ दयाल सर सर हाँ सर नमस्कार हाँ से सर को माने प्रिंसिपल सर मते कॉल करथिले परा से 11:40 रे नेबे हाँ हाँ सर मॉर्निंग सर हाँ सेटा मॉर्निंग रे कंफर्म हे छि मु ताको कहि देछि सर को भी कहि दिछि 11:40 रे नेबे ठीक है आ नीतीश सर को कहि कि से रेकॉर्ड सब पठै दिले हम साइन फाइन करिवो हाँ मु किसी अधा पदा कर देबे तो सर मिसिक कर देबा हैला सर मु क्लास रे अछि ठीक है हाँ सॉरी सो सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी बुझिलो राजस्मिता Yes, sir. सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट टा जोड़ा बनना है छी तार जो एरर रेट टा बा डिफेक्ट्स टा को रिड्यूस करिवा पई जो इताके तार सॉरी
गोटे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है तार जो एरर रेट आउ डिफेक्ट्स को रिड्यूस करबा पई जो टेक्निक आमे यूज करू ताको कहा जाय सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी आर नंबर ऑफ एरर्स को आमे फिक्स करू छु आउ को लोकेशन रो एरर टाको क्रिएट होची ताकि हमर जो समय सिस्टम टाको आमे होस्ट को दिके पकई देबो सर्वर रे तमे सर्वर हमकू जो एरर देबो तो से एरर टा बहुत कम देबो देखिबो तुमे किछि भी गूगल एक्सेस करिवो को समय नेट काटी होची कोन से लिखि दोची एरर रेट ता माने मैक्सिमम एरर देले से सॉफ्टवेयर टा दैट इज नॉट क्वालिटी बेस्ड सॉफ्टवेयर यदि मिनिमम देबो मिनिमम देले सेटा वी हैव टू कंसीडर मिनिमम माने कोथरे कोन फॉल्ट हैला से एरर टा देला सामान्य किछि स्मॉल इशू थिबो सेटा सॉर्ट आउट हेई पारिनी त तम बार बार दोची तो से एरर टा देबो आ जदि बिग एरर खाली एरर देइथिबो ताले सेटा हमें कहिबुन दैट इज रिलायबल मींस भरोसामान हमें कहिबो मु गोटे मेसेज पठेले सची को दैट मींस सची इज माय ट्रस्टेबल स्टूडेंट आउ रिलायबल स्टूडेंट रिलायबल माने मु जानि छी सची को कहली माने से कामटा कर देबो तो सची इज रिलायबल सौम्य इज राजस्मिता एवरी आउ रिलायबल माने मोर भरोसा अछि ता ऊपर जिस ताकू देइछि माने से कामटा निश्चित होय से करि देबो तो सेमती सॉफ्टवेयर तुम टंका देइछो माने बाय यूजिंग तुम एसबीआई सर्वर नहीं सॉरी एसबीआई वेबसाइट को ये करी कि बा तुम फोन पे गूगल पे जहां भी करी तुम टंका देइछो माने से रिलायबल माने टंका डेफिनेटली जाइछि यदि नाही जाइथिबो से तुमको रिटर्न कर देबो हाय तो तुमको रिटर्न कर देबो यदि किछि इंटरप्ट क्रिएट हला तो टंका डेफिनेटली ता पास को जीवो दैट इज रिलायबल हबो काम हबो राइट दैट इज रिलायबल हला तो एबे तुम रिलायबल को जिते एनालिसिस इफ यू मोर एनालिसिस बाय यूजिंग डिफरेंट कंटेंट ऑफ नेट और बुक्स और योर वीडियो लेक्चर्स व्हाटएवर देन यू एनालिसिस इफ यू मोर एनालिसिस द रिलायबिलिटी यू विल गेट द मैक्सिमम कंटेंट राइट एबे लास्ट रिलायबल थला रिलायबल कहली एबे तुम जिते बनै कि ताकू लिखि पार तुम गोटे कोड लिखिला गोटे सॉफ्टवेयर अछि से तुमको नंबर ऑफ डिफेक्ट्स बहुत लेस देबो ताकि तुम सॉफ्टवेयर टा माने क्वालिटी बेस्ड कहि परिबा क्वालिटी बेस्ड सॉफ्टवेयर तो कहले सेडा रिलायबल हैला से माने निश्चित भाबे काम हो एक्सेप्ट दिस लास्ट टॉपिक योर लास्ट इज रिलायबल बट इन previous it was I skipped that is post testing and coding next class रो पढेबी किंतु आज भी टिके कहूची हला सेटा ग्रुप रे मैसेज दियो 11:40 रे हला सुनो कोडिंग हमर जो गुटे कोडिंग और टेस्टिंग फास्ट आसीबो कोडिंग कोन गुटे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम अछि हला तो गुटे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम अछि तो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को कंप्यूटराइज रे तुमे ताकू इंस्ट्रक्शन हिसाब रे ताकू तुमे सेट करी से प्रॉब्लम टाकू रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को बाय यूजिंग कंप्यूटर रे तुमे जदी सॉर्ट आउट करि परिबो बाय यूजिंग एनी लैंग्वेज दैट इज कोडिंग माने तुमर ह्यूमन लॉजिक टाकू तुमे कंप्यूटर कोड रे जो कन्वर्ट करिवो दैट इज कोडिंग हला तो मन कर मु कहली गुटे एमती लॉजिक हबो ए लॉजिक टा एती सैटिस्फाई हेले एटा आसीबो ए लॉजिक टा सैटिस्फाई ले माने मु कहली जदी 2 देकरी डिवाइड हबो ताले सेटा इवन हबो आ 2 देकरी जदी डिवाइड हबोनी ताकू हमें ऑड कहिबो ताले मु गुटे नंबर देबी से नंबर टा से ताकू कैलकुलेट करिवो ताले मोर जो ह्यूमन लॉजिक टाकू मोर से लॉजिक टाकू मु कंप्यूटराइज रे कन्वर्ट करिबी इंस्ट्रक्शन माने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टाकू जो लॉजिक टा मोर अछि ताकू इंस्ट्रक्शन रूप रे लिखिबी मु आ से इंस्ट्रक्शन टा जोडा लेखा हेची सेडा से लॉजिक टा मोर जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम टाकू से लॉजिक टा रे प्रॉब्लम टाकू मु पुश करिबी आ सेही इंस्ट्रक्शंस बा कोड टा लेखा हबो एनी प्रोग्राम बाय यूजिंग एनी प्रोग्रामिंग लॉजिक तो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम टाकू सॉर्ट आउट करबा पई ताकू कहा जाय कोडिंग तुमे किछि पिला बुझी पाइलो किछि बुझिनी वंस आई एम रिपीटिंग हमर जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम अछि से रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम टाकू हमें कंप्यूटराइज रे जदी सॉर्ट आउट करि परिबू बाय यूजिंग एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ताकू कहा जाय कोडिंग आउ तापरे आसीबो टेस्टिंग से डिफरेंट पार्ट कोडिंग फर्स्ट तो कोडिंग माने इफ यू हैव ए वन प्रॉब्लम बाय यूजिंग एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज you very well known that if you
by using any programming language man, that means any programming language have more syntax. By using syntax of particular programming language, by using syntax or some keywords, some syntax, some keywords, your problems you have to implement it to the instructions by using any programming language. It is called coding. Coding means your logic you have to implement to the computer code. What is code? Code means instructions, right? So you have to write the instructions, or set of instructions is also known as program. You have to write a one program so that your problem you can sort out by using system. तो digitally तुम्हें तुम्हार thinking टाको instruction हिसाब रे बा तुम्हार logic टाको programming रे जो convert करा होची, और से programming will sort out your problems, real world problems, or gives the exact or right or correctness of the output. It is known as code. Code means human thinkings or human problems or human any problems you can sort out by using any programming language to system. तो सिस्टम को यूज करी बा कंप्यूटर की यूज करी यदि ह्यूमन लॉजिक बा ह्यूमन थिंकिंग को हमें कंप्यूटर रे कन्वर्ट करी कि ताको इंस्ट्रक्शन हिसाब रे कन्वर्ट करिवो बाय यूजिंग एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. इट हैज सम सिंटैक्स और सम कीवर्ड्स. थ्रू बाय यूजिंग दोज सिंटैक्स और दोज कीवर्ड्स वी हैव टू राइट द कोड that is already we have analyzed, or that concept you can implement to the code, right? Or humans problems or real world problem you can sort out by using systems to write the code or instructions, that is coding process. Or human things or humans real world problems you can sort out by using computer by writing the instructions is also known as code. तीन चारिटा वे रे कहली तुम जेमति मन राखी परिबा. Coding means code means गोटे लॉजिक. तुमर जो लॉजिक टाकू if you have to implement digitally, that is coding. और set of instructions is also known as program. तो जो code माने you can say in set of instructions also known as code. Code माने तुमर जो थिंकिंग टाकू तुमे डिजिटली बा कंप्यूटराइज से तुमे इंप्लीमेंट करलो ताकू कहा जाय कोडिंग. सोची बुझिलो? यस सर. एबे तुमे जे डिफरेंट बुक्स नेट फैट देखिबो डिफरेंट लैंग्वेज रे डिफाइन करा अछि, डिफरेंट वे रे डिफाइन करा अछि. कोडे लिखा अछि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देबो, कोडे लिखा तबो ह्यूमन लॉजिक को कन्वर्ट करा होछि बा इंप्लीमेंट करा होछि राइटिंग स्क्रिप्ट रे. एमति सब लिखा अछि जो वे रे तुमे बुझिबो सेमति वे रे लिखिबो, राइट? यार किनसे पार्टिकुलर डेफिनेशन नाही जे ए डेफिनेशन टा करेक्ट एटा तुमे जेमति देखिलो. कोडिंग माने तुमर जो थिंकिंग टाकू डिजिटली तुमे जो इंप्लीमेंट करू से ताकू कोडिंग कहा जाय. हला तो कोडिंग आउ टेस्टिंग आउ तार ये सब पढ़ेबी लागिबो किछि दिन, राइट? तो 3 दिन लाग सारिबा धीरे धीरे जहा जा सिलेबस अछि. आउ मेन हला तुमे जो नो पीडीएफ टा मु देई छी से पीडीएफ टा तुमे देखिबो आउ ता भितरे सब कंटेंट अछि पढिबो. इवेंट आउट पठले मत पचारिबो भी. आउ कोडिंग ता भितरे जहा जहा अछि सबुचेर इंपोर्टेंट हला डीएफडी. सबुचेर इंपोर्टेंट हला डीएफडी. आउ डीएफडी मो समय को से गोटे फार्मासिस्ट बुक रे 2-3 पेज बहुत बढ़िया अछि डीएफडी ताको देइतली. सी भीतर काम रे व्यस्त रहला कोन मागे करलानी देखिबा ताको नेते पीडीएफ बनै कि मु पठेबे. डीएफडी रे खाली डेटा फ्लो डायग्राम जे कोन सु लॉजिक बा सॉफ्टवेयर हमें डिफाइन करू ता पूर्वरु गोटे डीएफडी डिजाइन करा होची. ठीटाटा केमती फ्लो होबो इंटरनली, को पार्ट रो कोड को जीवो केमती कोन होबो ताको डीएफडी डिफरेंट सिंबल्स बा डिपिक्ट्स अछि ताको यूज करिगरी तुमे ताको गोटे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करिवो. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करिवो एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू ताको कहा जाय तुम डीएफडी पढिबो, रिलायबिलिटी पढिबो, टेस्टिंग कोडिंग मु कहिबी तार केते टाइप से जहा जहा अछि हला. आउ किछि कहिबो किछु ना ए करिबा नेक्स्ट क्लास ने?
ସଚି ତାକୁ ଆଡ୍ କରିବ ହଁ କୋଉଟେ ସାର୍? ତମେ ଆଡ୍ କରି ନା ଗ୍ରୁପ ରେ କରିବ ହେଲା ଗ୍रुप अच्छा एडमिन मतलब करिवो जो मते कि सौमेंद्र सर हां को आगे ना सर ना अच्छा मते कर ग्रुप एड मु ऐड कर देबे हला मते को ମୁଁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଆଡମିସନ କରିସାରିଲାଣି। हां ठीक अछि मु ताको ए करबी सेटा केबेरु चलीतला तो मु ऐड थेली किंतु ग्रुप एडमिन ठीक अछि ताले आउ किछि यदि पछारिबो तो मते पछार 1 मिनिट एक गुटे 2 मिनिट अछि आज मु से गाड़ी हमर चालिनी तो विंगर से पई टिके लेट हैला एटा मु से लोकल गाड़ी फाड़ी करके आसी से पई रिशिड्यूल करली तुम क्लास तो देखिए हम टेस्टिंग कोडिंग दा सरीले मु किछि सिलेक्टिव क्वेश्चंस तुमको देबी आज केते हे गला सो ना काली आज केते 17 काली देखिबा जेंति हो तुमर एडा सारीबा कोडिंग टेस्टिंग रे खाली ता कोडिंग आउ टेस्टिंग रो से तार किछि पॉइंट्स अछि मु लिखितले माने देखिबी ना से व्हाइट बॉक्स आउ ब्लैक बॉक्स से टेस्टिंग रे खाली कहि देले सरी जीवो काली टिके नेबा बेसी करी सारी देबा हला ओके सर।